Hey guys, welcome back to the Top Percentile YouTube channel. My name is Vidhan. I had scored a 99.99 percentile in MBA CET 2020. And as you all would be knowing already, admission notice for MBA MMS बाहर आ चुका है. And this includes all the timeline, कब है cap rounds, कब चालू हो रहे हैं, document verification, final merit list. Everything is out. So we are making this video so that you can understand this better. And जो भी important points है, I will be including in this video. So stay till the very end so that you know end to end about this notice and you don't miss a single timeline. So, okay, guys, starting with all the initial information that has been given. So, guys, जो document verification है, that can be done either through e-verification online or physical verification. Physical verification में you have to go to the FC center, जिधर तुम्हारे documents verify किए जाते हैं, all the documents that you have uploaded. So, as you can see over here, the process of timeline, let's go line by line. तो पहली चीज तो कैंडिडेट को ऑनलाइन रजिस्टर करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ऑनलाइन बिकॉज दैट इज लेटर वेयर यूल बी वेरीफाइंग दिल बी वेरीफाइंग इट ईदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट स्टार्टिंग में तो तुमको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने ही है. एंड एज यू कैन सी ओवर हियर, जो ई स्क्रूटिनी वाले दे डोंट हैव टू पर्सनली विजिट द एफसी सेंटर. And whereas the other ones who selected the offline one, they have to visit their nearest scrutiny center or the facilitation center. And then you can see the eligibility criteria over here for the candidates. तीन में divide किया हुआ है. The Maharashtra state candidates, the All India candidates, and J&K wala, and the NRI quota. So let's have a look. So this is what they're saying in the Maharashtra candidate, that you have to complete minimum 3 years of your bachelor's degree of the universities which are recognized by University Grants Commission or Association of India in any discipline. That's not a problem, but you need to have a minimum 50% marks uh, or equivalent, and 45% in case of reserved categories. And also, they should have obtained a non-zero score in MBA CET, which most of you all would have gotten. And others who belong to the JNK community or the All India candidates, they can have a look over here. They've written everything over here except इसमें सब लिखा हुआ है except the CMAT, ATMA, ZAT का, that you can also include over here. All right, moving ahead. ये वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है इधर www.mahcet.org, एंड इधर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है. एंड guys, those who had registered for MBA MMS CET, they don't have to pay any registration fee for the admission. However, जो दूसरे एग्जाम्स के थ्रू आ रहे हैं लाइक कैट, सी मैट, जैट, एडमा, मैट, जी मैट, whoever has not registered with the CET process, the CET exam, are required to pay the fee. And इधर फी दिया हुआ है 1500 एंड 1300 रुपए. 1300 फॉर द कैटेगरी पीपल. एंड हियर यू कैन सी द स्केड्यूल. सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपको लिंक ऊपर बताया उस पे अप्लाई करना है, एंड अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के डेट्स ये है. Till 2nd of July it starts, that's today, till 12th July 5 p.m. So I would suggest, guys, don't wait till the very end. This is very crucial, very important. आपका cancel हो सकता है, so please stick to the timelines. अभी से चालू कर दो, start it right now so that एक दो documents जो arrange करने हो वो within the timeline you can. Okay, and then moving on, जो documents तुमने already upload कर दिए उनका verification का डेट है फ्रॉम 3rd till 13th. तो ये साइमल्टेनियसली होते रहेगा. एंड यू कैन रीड ऑल द थिंग्स दैट आई ऑलरेडी सेड ओवर हियर. एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्कैन करो, अपलोड करो. ये सब ऑनलाइन वालों का है, दे डोंट हैव टू विजिट द एफसी सेंटर. एरर अगर कुछ नहीं मिला तो वेल एंड गुड, इफ फाउंड तो फिर ड्यूरिंग
इंटीमेट किया जाएगा कैंडिडेट्स को एंड दे हैव टू रिवर्ट विद द वंस जिसपे डिस्क्रिपेंसी मिला हुआ है. एंड फिजिकल वालों के लिए एफसी सेंटर जाना है आफ्टर यू अपलोडेड द डॉक्यूमेंट्स, रीआइट्रेटिंग अगेन द सेम थिंग्स. फिर एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकला जाएगा ये डेट खत्म होने के बाद, आफ्टर 13th. 15th को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट निकला जाएगा, बट इन केस अगर कुछ ग्रीवेंस है एनीथिंग, सो यू कैन डू दैट इन दिस विंडो फ्रॉम 16 to 18th. The candidates can raise the grievance about the correction whatever. फिर ये एप्लीकेशन में रिवर्ट होएगा आपको कि वॉट एवर द डिस्क्रिपेंसी दैट यू सबमिटेड. एंड फिर अपलोड करो अगेन द डॉक्यूमेंट जिसमें ये प्रॉब्लम था, स्टेटस आएगा आपको एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है. एंड फिर ये रिजॉल्व करने के लिए अगेन यू विल हैव टू गो टू द एफसी सेंटर. एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी आउट ऑन 20th. Okay, I hope guys this is clear for you. Now there are some important notes that I'll go through. So again इसमें सेम चीज काफी बार लिखी हुई है. सो अगेन जो भी कैप राउंड्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं ऑनलाइन करो, स्कैन करो डॉक्यूमेंट्स, ग्रीवेंस सॉल्व करो, एफसी सेंटर जाओ इन केस यू सिलेक्टेड ऑफलाइन. एंड फिर कैप राउंड चालू होंगे. JNK वालों को कैंडिडेट्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन इधर अप्रोच करना है जिधर सच कोटा इज ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी. ओके. एंड देन जो भी इंस्टीट्यूशनल द कैंडिडेट्स aspiring फॉर एडमिशन फॉर इंस्टीट्यूशनल कोटा, seats remaining vacant after cap, it is mandatory to get registered documents verified. तो ये करना, ये प्रोसेस करना सबको है ही, irrespective of however you are getting in. अगेन इसमें वही बार बार बोला जा रहा है कि सेम ड्यूरेशन में आपको खत्म करना है सब. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वंस हु बिलोंग टू द कैटेगरी SC, VJ, NT, OBC, SBC and SEBC. Caste validity certificate and ST category shall submit tribe validity certificate, and all the backward class candidates excluding SC and ST आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट विच इज वैलिड अप टू 31st March 2027 देना होगा. एंड अगर इफ यू फेल टू गिव द ओरिजिनल सर्टिफिकेट और द रिसीट देन आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है. एंड नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट अगेन इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ओके. एंड अगर ये आप नहीं दे पाए तो यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर द कैप एडमिशंस. EWS के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा. यू विल हैव टू गिव दैट टू द अथॉरिटीज. एंड जिसने भी रिजर्व कैटेगरी के लिए रजिस्टर किया हुआ है, like I said, if you're not able to provide the certificate, you'll also have to pay a difference of 200 rupees, which will happen online. Okay. And I've got a lot of queries about the NRI quota. So this is what it is. Candidate applying for admission through NRI, OCI, PIO, CIWGC should refer to the web portal, which is the link given over here. And उसमें आपको सब information मिल जाएगा. Also, there will be one more notice regarding option form filling and cap allotment. It will be declared shortly, so we'll be making a video on that as well. So just subscribe to our channel, like our videos, comment if you have any doubt, and subscribe so that you don't miss any notice like this further, because we always keep checking such notices so that we can help the aspirants and give them more clarity. स्क्रूटिनी सेंटर का लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है. Again, all the eligibility rules, regulation, everything is available. If you have any doubt, you can contact on this number. But काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि they don't get proper response, they are not able to get clarification, but this is what it is. And they also have a messaging system inside the login, so you have to try everything if there's any issue. एंड सैटरडे संडे भी खुला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम 10 AM to 5:30 PM.
So, guys, I hope. See, most of you all would have read this document already, but it's our duty to again make some clarifications, uh, give you an idea of what this document is, and just highlight some important points which can help you. So, I hope this video helps you. Just hit the like button, subscribe to our channel so that we get motivated to make such more videos. And again, reiterating that there would be one more notice. So if you don't want to lose out on any such notices, please subscribe to our channel and we'll definitely help you. Thank you so much, guys.